हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम एक कंपनी का यहाँ देख रहे हैं, मैट्रिक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो इसमें आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल है। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स रेट जो है अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वी हैव द प्रोडक्ट नेम एंड आइटम प्राइस। सो फॉर द ईच आइटम प्राइस इज 5000, नंबर ऑफ आइटम्स 10, देन टोटल प्राइस, देन here you will find the different type of tax rate, and here will be the tax price and total amount. So how to calculate this? So first of all we have find the total price. So simply press equal, then select item price, press asterisk to multiply the item number, click the cell and hit enter. So 5000 multiplied by 10, you will find the value 50,000. Then scroll down to the last. So you will find the total price. Now the major part of this video, which is the tax rate. So this is the different tax rate that will applied here, and you will find the tax price and then amount. So first of all I will select the all columns and then format cell, then click the percentage. For the decimal places will be 2, press OK. Now I will type the type of rate for the Samsung mobile, which is the 25.50. Again click, simply like this, and here will be 15.30%, 10.50%, then here will be 20 point. This is the different type of rate which I have applied for the each item price. Now this will apply it for total price. So simply click here, equal and total price, just press asterisk sign, then again this column and hit enter. You will find the 25.50% for 50,000. The tax will be 12,750. Now scroll down. So this is very simple idea to find the different tax. Now here I will add these values. So the final amount equal, then plus, and again this, hit enter. तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह जो है इसका अमाउंट निकाला है, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है, स्क्रॉल डाउन. नाउ hit enter. You will find the total value, grand total.